through? यस सर, हम लोगों की तो मीन्स चलती ही रहती है क्योंकि हमारी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है, तो बहुत सारे हम उनके अंदर कॉम्पिटिशन जो है वो उसको करवाते रहते हैं। कभी स्टोरी टाइम करवा लिया, कभी प्रिंटिंग करवा ली, और कभी कलरिंग वर्कशीट दे दी उनको, कभी ट्रेसिंग वर्कशीट दे दी। इस तरह से फिर हम उनको असिस्ट करते हैं। Wonderful, wonderful. बट ये है कि जब से मतलब हम ये क्लासेस वगैरह ले रहे हैं तो उससे हम लोगों को आइडियाज मिलते हैं, और जिससे क्या होता है ना, अब इस ग्रुप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यानी कि हमें और अच्छी इंस्ट्रक्शंस पता चलती हैं। और वैसे भी हम लोग मतलब कहीं भी कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है, कोई भी न्यू मैथडोलॉजी आती है, उसको हम जरूर शामिल करने की कोशिश करते हैं अपना वे ऑफ टीचिंग में, ताकि हम अपने आप को जो है दुनिया से अप टू डेट रख सकें कि क्या चीज़ नहीं आई है उसको हम, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि साउंड चेंज होती रहती हैं, जो लेटर्स होते हैं उसकी समटाइम्स मतलब न्यू न्यू चीजें आती रहती हैं, तो हम उसको भी जो है अपने सिलेबस में और अपने जो है लेसन प्लानिंग में ऐड करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उसके जरिए भी ना बच्चों को असेस कर सकें कि वो भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है, जो न्यू न्यू टर्म्स आती रहती हैं। Adam, would you want to ask any question to Farhana? बस ये पूछना चाहूंगी कि फरहाना, आप इस एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो सिर्फ मुझे ये बताएं कि बच्चों के टेम्परामेंट्स को कंट्रोल करने के लिए वो कौन सी मेथड और स्ट्रेटजीज हैं जो हमें अप्लाई करनी चाहिए, स्पेशली द किड्स फ्रॉम प्ले ग्रुप टिल प्री वन, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टिल प्री वन, तो उस तक के बच्चों को हैंडल और टैकल करने के लिए उनके टेम्परामेंट्स, उनके मूड्स होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली जब हम पढ़ने बैठे हैं, उनको पढ़ाने बैठे हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जाए? सबसे पहले तो ये कि अपने अंदर पेशेंस लाना होगा फुल, और जितनी एक्टिंग आप कर सकते हैं ना उनको मतलब अपने लेवल पर आने के लिए, और जितना आप अच्छा बन सकते हैं उनके सामने, उनके लेवल के लिहाज से जाके आपने बस वो करना है। बिकॉज इन मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स डिप्लोमा आई लर्न वन थिंग फ्रॉम माई टीचर, that this is the one rule of Montessori, that a teacher should be a good actor। आपको आप जितना अच्छा एक्ट कर सकते हैं ना उनके सामने, क्योंकि हमने समटाइम्स उनके मूड के लिहाज से अपने आप को करना होता है, उनकी एज के लेवल पे जाना होता है, फिर उनसे वो बात पूछनी होती है, क्योंकि मेरे साथ तो स्पेशली ये मसला भी था कि मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम था। तो ये मेरी लाइफ का जो है सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि दे आर स्पीकिंग, दे आर अरबिक स्पीकर्स, और वी आर स्पीकिंग इंग्लिश इन स्कूल। तो मुझे शुरू शुरू में इतनी परेशानी होती थी, फिर मैंने उनके एज लेवल के लिहाज से उन्हीं से उनके वर्ड सीखने शुरू किए। जैसे वो लोग चॉकलेट को, अब मैं यहाँ से जब मैं आई थी टीचिंग में, तो मैं उनको कहती थी मैं आपको चॉकलेट दूंगी, मैं आपको स्वीट दूंगी, आधे बच्चों की समझ आए, आधे बच्चों की समझ नहीं आए। फिर मैंने उनसे ये डिस्कवर किया उनके अपने स्टाफ से कि भाई ये लोग क्या कहते हैं चॉकलेट को, तो मुझे पता चला कि वो लोग चॉकलेट को हलावा कहते हैं। फिर मैंने उनसे कहना शुरू किया कि ओके आई विल गिव यू हलावा, और उनकी उन एक्शन वर्ड तो बच्चों को सीखना सबसे ईजी होते हैं, और उन्हीं के उसके आपस की बातचीत से मैंने उनके वर्ड सीखे। फिर उसी के मुताबिक मैंने जब उनसे बात शुरू करने की कोशिश की ना, तो अब वो बच्चे जो मतलब शुरू शुरू में मुझसे डरा करते थे लैंग्वेज की वजह से, तो अब जब मैं उनसे उनकी लैंग्वेज में बात करती हूँ ना उनको मनाने के लिए, तो वही बच्चे हैं जो अब वो मुझसे सुनते रहते हैं। तो आपको सबसे पहले जो अपने अंदर पेशेंस लाना होगा उनको अपना बनाने के लिए, फिर वो जो चीज उनको Okay, पसंद है आप वो जी जी, ओके, आई हैव जो वन चीज मोर उनको क्वेश्चन कि ये जैसे आपने बात की रिवॉर्ड्स की बात की, जैसे मैंने भी सर से की थी, एक छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूं, तो क्या ये ठीक है कि आप हर वक्त ही बच्चे को रिवॉर्ड के चक्कर में उनसे आप काम करवाओ? डोंट यू थिंक कि इस तरह वो उनकी नेचर में भी स्टेबलनेस आ जाएगा, और उनको यही होगा कि अच्छा मैंने इस तरह से ब्लैकमेलिंग करनी है, या कुछ भी मैं किसी चीज को गेट करने के लिए मुझे ब्लैकमेलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे वो चीज मिल जाएगी। तो डोंट यू थिंक इट वुड बी अ टफ सिचुएशन somehow, or it हम will लोग तो always work? बच्चों को लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करते, क्योंकि फिर वो वैसे मतलब बच्चे के अंदर एक बहुत ज्यादा यूज भी किसी चीज का अच्छा नहीं। हम लोग करते हैं, यानी हम लोग वीकली देते हैं बच्चों को चॉकलेट है, सर्टिफिकेट, हम लोग मंथली ट्वाइस अ मंथ और प्राइस अ मंथ, इतना हम लोग उनके अंदर सर्टिफिकेट तो कंपटीशन रखते हैं कि किस बच्चे की प्रोग्रेस किस तरीके से है, तो फिर हम उसको उसके कैटेगराइज करके वो सर्टिफिकेट हम उनको देते हैं। और इसके अलावा हम उनके लिए स्टिकर्स रखते हैं, स्टार्स रखते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, मतलब वीकली बेसिस पे होता है। ये बहुत ज्यादा कभी हो गया, यानी कभी कभार बच्चे बहुत ज्यादा जब हो जाते हैं ना, तो फिर हम ट्वाइस और वीक रख लेते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे नहीं, लेकिन देते जरूर थे, बिकॉज इसका
गुड पार्ट ऑफ टीचिंग कि आप उनको रिवार्ड दें, कभी स्वीट्स हो गई, कभी स्टिकर्स हो गए, कभी कुछ स्माइली फेसेस हो गए, इस तरह से। और जिस चीज से वो बहुत खुश होते हैं, और जब उनको कहीं आउटसाइड ले जाना हो, तब बहुत ज्यादा उनको वो करना हो, उनका मूड खुशगवार करना हो, तो उनके लिए ट्रिप्स भी अरेंज करते हैं, तो ये भी करना पड़ता है। तो जो चीजें उनकी फेवरेट होती हैं, फिर उसका किसी बच्चे से पूछे कि इसको किस चीज मतलब हम कैटेगराइज कर लेते हैं कि किसको किस किस चीज पसंद है, फिर उस हिसाब से हम उनके लिए चीजें रखते हैं। जैसे कुछ बच्चों को ऑरेंज जूस बहुत पसंद होता है, तो फिर हम ये कहते हैं उनको कि नहीं, अगर आप लोग ये चीज अच्छी करोगे तो फिर मैं आई विल गिव यू ऑरेंज जूस। तो फिर इस तरीके से यानी सुन लेते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा देना अलाउ भी नहीं होता। All right, all right. Thank you so much. Welcome. Well, thank you, Farhana. We really appreciate your awesome and a wonderful response. We have Ruqayya. Ruqayya, how are you today? I think Ruqayya is having some problem. But anyway, that was really great contribution from Anam and Farhana. Both of you, you really did a great job. And we were talking about assessment methods in our last lecture. And we have Pgcert, questioning techniques, observations, peer assessments, self-assessment, concept maps, and think aloud protocols and stuff like that. And we also have choose the method that aligns best with your learning objectives and nature of the content being assessed. यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात करता जाऊं कि फर्ज करें अगर अनम ने हमें एक मतलब कि मेथड दिया है असेसमेंट का, रिवॉर्ड का, या उसके रिस्पांस का, कोई भी थ्योरी अप्लाई करने के बाद, तो ज़रूरी नहीं कि वही जो मेथड उन्होंने यूज़ किया वो फरहाना यूज़ करे या रुकैया यूज़ करे या कोई somebody else और आमना यूज़ करे, because it still varies from class to class and behavior to behavior and the student age group as well. So that means even during the assessment, you got to be a little bit more careful. And I would appreciate if you could read this slide for me, assessment tools, rubrics. Yes, sir. Criteria. These are the specific aspects or dimensions of the assignment or task that will be evaluated. Criteria should be aligned with the learning objective and expectations for the assignment. Descriptors. Descriptors typically include language that describes what a student must do to meet each level of performance, such as excellent, proficient, basic, or below basic. Level of performance. Rubrics often include multiple levels of performance, ranging from highest to lowest. So we're talking about a tool that is used to check and to evaluate the performance of the students, to assess the performance of the student. So rubrics is one of the effective tools that we could use. So it helps us to understand the levels of performance. It includes multiple levels of performance, such as ranging from highest to low. So, such as excellent, proficient, basics, low, below average. So sometimes it's kind of a yardstick that you can use to assess and evaluate the performance of your students. हमारे इसके अलावा भी तो मतलब हमने कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बनाया होता है ना, जिसकी बिना पे हम कहते हैं कि बच्चे फेल हुए या पास हुए, या उनकी जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो वी ऑलवेज ग्रेड आवर स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द असेसमेंट टूल
Sometimes these assessment tools are formalized or formulated by the authorities, by the school institute that we work with. Any question on this No, assessment sir. tool? Is it clear? जी sir. And so, like with one of my IELTS students yesterday, I told her कि आप 5 दिन की अपनी जो है लिस्टिंग स्किल्स की सारे उनको रिकॉर्ड करो, उनके आपने जितने भी आप उसमें स्कोर लेने हैं आउट ऑफ 40 उनको लिखो, और आफ्टर 5 days or after 5 like tasks, I should be able to come up with the conclusion that by the end of the day your approximate band or score would be like this. So एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है. इसी तरह हमने स्कूल्स में क्राइटेरिया सेट किया होता है. कुछ लोगों का ये भी होता है कि भाई below 60 they will not accept it, ताकि जब वो बच्चे फाइनल एग्जाम्स लिखते हैं, बोर्ड के एग्जाम, तो उसमें कम से कम अगर वो 60 स्कूल ने क्राइटेरिया सेट किया है तो फिर बच्चे वहां पे 60-70 कर जाएं, या दे विल नॉट गेट लेस देन 50 बिकॉज दे वुड थिंक दे हैड आल्सो फेल्ड इन स्कूल by getting less than 50, so that's on risk side. तो मेरा ख्याल है कि it is always important for us, even if you are teaching doing homeschooling or teaching like home-based situational schools, you still need to formulate some kind of tools to assess the performance of your student. Right. Yeah, can you read this for me, please? A rubric serves several purposes in assessment. Scoring scale. A rubrics may include a numerical or descriptive scoring scale to assign a score or rating to each level of performance. Feedback. Rubrics often include space for providing feedback or comment to students on their performance. Clarity. They provide clear expectations to students about what is required for successful completion of an assignment or task. Consistency. They promote consistency in grading by ensuring that all students are evaluated based on the same criteria and standards. Very good. So then again, you have the same criteria for the whole class. You don't need to be biased. You've got to be very, very careful and at the same time very generous, because you set a criteria for the whole class. It should be the same criteria. And this criteria, like let's say talk about clarity, clarity provides clear expectations to students about what is required for successful completion of an assignment or tasks. So clarity, we need to make things clear. And the clarity, when everything is clear, when our criteria is clear, when the tools are clear, that means we should be able to come up with this assessment. Okay, आपने अगर अपने आप को improve करना है तो फिर आप आगे किस तरह से improve कर सकते हैं. Like it will tell us what is required for successful completion of an assignment or task, and then we need to have consistency. Consistency promotes in grading by ensuring that all students are evaluated based on the same criteria and standards. इसमें कोई addition है तो आप कर सकते हैं. Anam, you can talk. Rukaiya, you can talk. Anyone can give me the contribution, please. Anam, you could do that, please. Sir, anything else in this? Yeah, addition. आप कुछ इसमें करना चाहिए, इसको थोड़ा मजीद elaborate करना चाहिए, explain करना चाहें तो. Sir, on overall performance की कर सकते हैं हम बात इसमें? जी बात करें, ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें. जी करें.
मतलब असेसमेंट जो आप कर रहे हैं बच्चों की ओवरऑल परफॉर्मेंस, और आपने एक ही क्राइटेरिया सब क्लास के लिए, सब बच्चों के लिए सेट करना है ना? जी जी। तो जी जी, उसकी बात है। rubrics of often include space for providing feedbacks. तो rubrics जो एक टूल है, इसको जब हम लेके आते हैं, it helps us to provide feedback. अब फीडबैक किसी का भी हो सकता है, मतलब हम ओपन अप हो जाते हैं ना। अब देखिए जी जी। आमतौर पे क्या होता है, जब हम टीचर को मिलते हैं ना, अपने जब पेरेंट्स मीटिंग पे जाते हैं, तो कुछ कुछ टीचर्स इतने ओपन होते हैं, वो कहते हैं कि आप अपना फीडबैक दें कि आपको क्या लगता है कि हम अपने बच्चों की, जो हम मतलब आपके बच्चे पढ़ा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को हम बेहतर कर सकते हैं। वो ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब आप मतलब पेरेंट्स से कि आप सजेस्ट करें कि अगर हमने जो अभी थ्योरी यूज की है, जो मेथडोलॉजी हमने यूज की है फर्स्ट टर्म में, उसमें आपको क्या लगता है कि हम कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं? बिकॉज एवरीबॉडी नोज देयर इज ऑलवेज ऑलवेज ए रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक ऐसा टूल है जो हमें अपने आप को ओपन अप करवा देता है, करता है कि भाई आप दूसरों से बिला इम्तियाज, without any hesitation, you are actually exposed yourself, asking others to take part in this kind of assessment, and if they have any suggestion, they can bring in. ये ना बोले। सर तो ये तो फिर दोनों तरफ अगर मैं एज मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग के जैसे आपने एग्जांपल ली, तो ये तो फिर दोनों तरफ अप्लाई होता है। अगर एज अ पेरेंट भी हम ये सोचें तो हम एज अ पेरेंट भी ये चीज हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब टीचर्स को जाके लाइक जैसे हम पूछ सकते हैं उनसे कि हमारा बच्चा जो है वो कहाँ पर कर रहा है, स्टैंड कर रहा है, और आपकी इसके बारे में क्या है, और मजीद उसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये पेरेंट और एज वेल एज टीचर ये दोनों आपस में टूल्स अप्लाई कर सकते हैं। टीचर्स ने तो करने ही होते हैं, एज अ पेरेंट अगर मैं बात करूं। यही तो एग्जैक्टली आपने बचा फरमाया, यही तो बात हम कहना चाह रहे हैं ना, कि अगर स्टूडेंट को लोअर लेवल से इनिशियल स्टेजेस पे पता चल जाए कि मेरे अंदर ये स्किल है, और उसका टीचर, उसकी टीचर उस पे काम करे, उसके पेरेंट्स उसी स्किल पे काम करें, जो कि वो कल को स्किल जो है वो ब्रिंग फोर्थ हो सकती हो, और उसी स्किल में वो बच्चा उसी गिफ्ट में, और जो उसके अंदर कैरिश्मा है उसी को जब वो पॉलिश करते हैं, तो बच्चा अपनी ग्रूमिंग करता है, then that child would be a successful citizen. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ये बात राइट। वापस हमें उस सेंटर पे लाके खड़ा कर देती है कि मतलब हम आज भी बात कर रहे हैं सुबह की क्लास में भी, it is very tragic that after even 25 years of age, we still don't know what to do and एग्जैक्टली which direction to take. ये अलमिया है ना, 25 साल के बच्चे को ये ना पता कि उसको फ्यूचर में करना क्या है। तो अगर स्टार्ट से पेरेंट्स, एग्जैक्टली। ये वही बात है, हम हर एक बच्चे से ये चाहते हैं कि ही और शी बिकम अ मेडिकल डॉक्टर और ए लॉयर और समथिंग, और आजकल चलो डिजाइनिंग आ गया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आज तो चलो, आजकल तो बहुत ज्यादा लाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। फिर भी अभी भी सेट क्राइटेरिया वालिदैन का, जिसको हम कहते हैं, they are actually एग्जैक्टली। risky trends, they are actually bad trends that we had said before, कि अगर ये बच्चे ने ये नहीं करना तो फिर कभी भी नहीं ये बच्चे को हमने आगे पढ़ाना। I think we are still on the track. Yes, Anam? जी जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे, अब आ रही है। जी जी, अब मैं ये कह रहा था कि आई थिंक वी आर स्टिल ऑन द ट्रैक, कि हम बच्चों को इतना मतलब उनको फोर्स ना करें कि वो हमारी मर्जी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू our will, they should not obey only our will, but we should be able to understand their personality, उनका बिहेवियर, और कल को वो बच्चा किस तरह से अपने स्किल एग्जैक्टली। को लेके पॉलिश करके आगे बढ़ सकता है, then that child would be successful citizen. और पेरेंट्स और टीचर दोनों मिलके किसी भी बच्चे की अंदर की क्वालिटी को, द कैरिश्मा, द हिडन कैरिश्मा जो इंसान के अंदर है, उसको उस पे काम किया जाएगा, तो फिर तो बात बनेगी। एग्जैक्टली।
सर मैंने भी ऐसा ही, मेरे और मेरे हस्बैंड ने, हम दोनों ने यही प्लान किया हुआ है अपने बच्चों को लेके, कि हमने इनको जो जैसे पहले जमाने में होता था, हमारे पेरेंट्स कहते थे कि यू हैव टू बिकम डॉक्टर और इंजीनियर, बस ये दो पहले प्रोफेशंस थे, इसके अलावा किसी पे बात भी नहीं होती थी। तो हमने ये स्पेशली प्लान किया था बिफोर वी स्टार्टेड आवर जर्नी। हमने ये सोचा था कि हमने अपने बच्चों को कभी भी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करना, हमने उनको फ्री विल देनी है, उनको प्लेटफॉर्म हमने सिर्फ प्रोवाइड करना है, और उनको सही और गलत का बता देना है, दो ट्रैक्स, और उन्होंने अपने मर्जी से उसको चूज करना है, और उस सब्जेक्ट को लेके या वट एवर दे वांट टू बिकम इन फ्यूचर, वो उसको लेके वो चलेंगे। तो हम तो इस बात पे स्ट्रिक्ट हैं, और हम अभी अपने बच्चों को कहना भी शुरू हो गए हैं, क्योंकि अब उनको समझ आनी शुरू हो गई। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरा जो बड़ा बेटा है उसको फुटबॉल खेलने का बहुत ज्यादा शौक है, वो बहुत पसंद है उसको फुटबॉल। तो लाइक मुझे कहीं लगा कि वो अपनी स्टडी से भी पिछले साल कहीं थोड़ा सा डी ट्रैक हो रहा था इसमें, कि यार अच्छा मैं फुटबॉलर बनूंगा, और मेसी उसका फेवरेट है, तो मैं फॉलो करूंगा दिस एंड दैट। तो फिर मैंने इसकी टीचर से बात की, कोऑर्डिनेटर से। तो मैंने उनको डिस्कस किया कि आजकल ये बहुत ज्यादा इंडल्ज हो रहा है फुटबॉल में, तो मुझे मसला नहीं है, मैं अप्रिशिएट इसको करती हूँ कि आप फुटबॉलर बनो, बट उसके लिए आपको कुछ पढ़ना है, और उसके बाद आप ये फील्ड भी अपनी साथ साथ रखो, ताकि आपकी पढ़ाई की फील्ड भी डिस्टर्ब ना हो। ओके फाइन, इफ यू वांट टू बी अ फुटबॉलर यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल फुटबॉलर इफ यू फोकस ऑन योर स्टडीज ऑल्सो। तो मैंने उनकी टीचर से डिस्कस किया, तो टीचर ने भी मुझे इस बात पे कहा कि बिल्कुल आप ठीक है, नहीं मैं भी अब मूसा नाम है उसका, तो मैं मूसा को समझाऊंगी कि इस तरह से करे, अगर आप फुटबॉलर बनना चाहते हो बेशक बनो, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्टडी को भी आपको कंटिन्यू करना और अच्छे तरीके से करना, ताकि आप अच्छे फुटबॉलर बन सको। या वेरी गुड। अब ये रीइंफोर्समेंट भी होगी और बच्चे की वो क्या ग्रूमिंग भी होगी, और उसको मोटिवेशन इतना अच्छा मिला कि वो सोचेगा कि यार अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं बेहतर फुटबॉलर बन सकूंगा। एग्जैक्टली एंड इट वर्क्स, एंड इट रियली वर्क्स। मैं आपको सच बता रही हूँ, ये 3-4 मंथ्स पहले की बात है, वो बहुत अच्छा वो मिल के एक कॉम्बिनेशन जो चला है, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। वो बहुत अच्छी चीज है जो जा रही है, तो मुझे खुशी होती है कि अच्छा यार मेरा बेटा एक्सेल कर रहा है, फुटबॉल भी सीख रहा है, अपनी टीम में भी सिलेक्ट हो रहा है, और ये है कि ये अपनी स्टडीज को भी साथ साथ कंटिन्यू कर रहा है, ताकि ये एक अच्छा इंसान और अच्छा फुटबॉलर बन सके। तो ये चीज उसने भी अंडरस्टैंड की। वेरी गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट। ये लाइफ एक्सपीरियंस है ना हमारे। एग्जैक्टली सर, मेरे ख्याल से जो हमें लाइफ एक्सपीरियंसेस देती है, लाइव एक्सपीरियंस मैं कहूंगी, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, और इंसान को समझ आने वाले होते हैं, बनस्पत इसके कि आप जो पढ़ के एक्सपीरियंस लेते हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट। और मजे की एक और बात, इन एडिशन टू दैट, व्हेन इवन यू share your let me say also live experience now एग्जैक्टली with your friends in your school, with your teachers, I mean the teachers and the students, वो समझेंगे कि यार मिस सो एंड सो और मिसेस सो एंड सो की जिंदगी में इस तरह से एक्सपीरियंस हुआ है, तो फिर हम इसको इस तरह से लेके चलते हैं, तो फिर लोग भी सोचेंगे कि अगर एग्जैक्टली इन पे ये मेथड उसने काम किया, एक्सपीरियंस हुआ, तो फिर इसका मतलब हम भी कर सकते हैं। तो योर एक्सपीरियंस, योर पर्सनल एक्सपीरियंस एग्जैक्टली एक्चुअली मैटर्स द मोस्ट, इट हेल्प्स अ लॉट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट, आई एग्री। हाँ, वो कभी कभार पता है क्या होता था, हम शर्माते थे कि यार हमारी घर की स्टोरी हम कैसे शेयर करें, वो वक्त चला गया। एग्जैक्टली आज वो वक्त नहीं एग्जैक्टली है। आज ये है कि नहीं। आप अपने घर की स्टोरी, आप अपनी स्टोरी रिलेट करते हैं, जो आपका लाइफ एक्सपीरियंस हो चुका है। पीपल एक्चुअली थिंक अबाउट यू, ओके, तो दैट मीन्स ये बंदा, ये अल्लाह की बंदी, आपकी बंदी इस प्रोसेस से गुजर कर यहां तक पहुंची है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक्चुअली जो हम अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनका मेन मकसद क्या होता है कि भाई आप, यू कैन नॉट बिकम समवन ओवरनाइट, यू कैन नॉट मेक योरसेल्फ एनीवन ओवरनाइट। Yes, there's a potential in you, but potential also requires and demands what? A proper process and procedure. After that process and procedure, you are able to touch the highest pedestal of your caliber. You understand what I'm saying?
तो फिर हमें अपने स्टूडेंट के साथ भी जब हम उनके असेसमेंट कर रहे हैं, जी जी एग्जैक्टली। असेसमेंट में उनके साथ साथ हमें उनको बताते जाना चाहिए कि बेटा ये एक प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के बाद यू कैन एक्चुअली सेलिब्रेट योर एग्जैक्टली अचीवमेंट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली Hi, Mr. Taha, how are you today? You all right? Okay. Any contribution of Ruqayya? Are you there now? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं बच्चे, आप ठीक हैं? ये सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? ठीक ठाक, ग्रेट। जी रुकैया, तो आपका कंट्रीब्यूशन चाहिए था। असेसमेंट की बात हो रही है, फिर थोड़ी सी पर्सनल डेवलपमेंट भी इसमें आ गई है। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस प्लीज? सर सॉरी, अभी तो मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है, बस मैं सबकी बातें मैंने सुनी है, तो कुछ एडिशन में नहीं कर सकती। अच्छा, कोई बात नहीं। Okay. So Ruqayya, can you do me a favor? Can you at least read this slide and then let's have explanation from your side. Yes sir, design assessment tools. Develop assessment tools or instruments that align with your chosen assessment methods and learning objectives. Ensure that these tools are clear, concise, and relevant to the content being assessed. Consider using rubrics or scoring guides to provide structured feedback to students. तो रुकिए, जो जो फर्स्ट आपने तीन चार लाइनें पढ़ी है, जरा उनको एक्सप्लेन करें थोड़ा सा प्लीज। जी सर, इसमें ये है कि जो आपकी जो असेसमेंट टूल्स हैं वो इस तरह के होने चाहिए कि जो चीज़ आप असेस करना चाह रहे हो वो आपको उसी के रिगार्डिंग रिजल्ट ही दें कि ये नहीं कि आप जो है वो आपकी जो असेसमेंट जो आपकी रिक्वायरमेंट की जो चीज़ आप असेस करना चाह रहे थे, किसी भी एबिलिटी को या किसी भी नॉलेज को वो आप असेस करना चाह रहे थे, वो लेकिन आपने जो असेसमेंट टूल अप्लाई किया है वो वो उसके रिजल्ट्स के लिए नहीं था, उसके रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। हाँ, इसमें मैं अब थोड़ी सी बात मैं भी ऐड कर दूं कि आपने बेसिकली एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हमने स्टार्ट में ऑब्जेक्टिव बनाए थे। आप फर्ज करें आपको एक क्लास दीजिए, ग्रेड 3 दिया जाता है कि आपने उसको टीच करना है। तो सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव बनाया कि मेरे पूरे साल के या 6 माह के या 3 माह के ऑब्जेक्टिव्स हैं बच्चों के पढ़ाने के। ठीक है, फिर आपने उनको ब्रेक डाउन किया, आपने उनको वीकली बनाया या मंथली बेसिस पे बनाया। मंथली बेसिस पे जब आप उनके असेसमेंट करते हैं तो बेसिकली आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने लेके कहते हैं, ओके let me get back to my objectives. You bring your objectives in front of you and then you do the assessment. क्योंकि हमने किसके असेसमेंट करनी है? हमने लर्निंग की असेसमेंट करनी है कि जब हमने पॉइंट ए से स्टार्ट किया था, नो maybe we are somewhere like in a point, let me say point from A to point M. So point M तक हमने एक जो प्रोसीजर उसमें से हमने जिस प्रोसीजर में से हम गुजरे, जो हमने मेथडोलॉजी यूज की, जो हमने मेथड्स वहां पे अप्लाई किए, उनके बाद हम देखते हैं कि हम पॉइंट नंबर एम तक आते हुए जो अपने ऑब्जेक्टिव जितने हमने सेट किए थे, 3 थे या 2 थे, हम उनको अब मेजर करना चाह रहे हैं। सो देन वी नीड टू डिजाइन an assessment tool. Assessment tool will help us to measure the learning objectives that we had set before we started. I think we are together. Are we? यस सर। जी सर। Taha, you want to say something, please? I think Taha is somewhere far away. Farhana, are you comfortable to contribute something on this?
Yes, sir. Am I audible? Yes, you are. Okay, please close the door. Can you please close the door? Go ahead, please. Yes, sir. जो design assessment tools होते हैं, they are really helpful for us or in the learning of students method. इसमें जो है हमें You're breaking. Yes, sir. Here are am I audible now? Yes, you are. Please go ahead. Yes, इसमें जो है हमें जो इससे लर्निंग एक्सपीरियंसेस हमें मिलते हैं कि हमने जो बच्चों को असिस्ट किया है असाइनमेंट्स वगैरह के जरिए और डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट के जरिए और क्विजेस वगैरह के जरिए जो हमने करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमने जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हमारा गोल है मेन वो हमने अचीव किया है कि नहीं किया है और जो हमारा जो टीचिंग का आउटकम है और जो बच्चों का लर्निंग का आउटकम है वो किस हद तक पूरा हुआ है तो ये हम इस तरीके से जो है हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं Yeah. All और right. फिर जो है थोड़ा सा मतलब हमें ये भी पता चलता है कि बच्चों को जो हमने कॉन्सेप्ट दिए हैं वो क्लियर है भी या नहीं है ये बड़ी गाइडलाइन बात कर की है। अब आपने क्लियर बात की है कि जो हमने उनको दी है दिया वो उसको या जो वो उसको क्लियर वो समझ भी पाए हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो रहे हैं आया कि नहीं हो रहे तो इससे हमें यानी कि बहुत मददगार होते हैं हमारी टीचिंग में Yeah. Farhana, can you read the lower part, please? These 4 lines for me. Yes, sir. Ensure that these tools are clear, concise, and relevant to the content being assessed, or consider using rubrics or scoring guides to provide structured feedback to students. Great. Ensure that these tools are clear, concise. कि बड़ा ना कुछ बना के make sure कि आपके जो tools हैं ये भी clear and concise हैं and relevant to the content being assessed. तो जो आपने assess करना है वो भी आपके साथ relevant हो. ये बात नहीं कि फर्ज करें आपने पढ़ाया मैथ है तो आप assessment इंग्लिश की वहां पे करना शुरू कर दें. No, not at all. That means you are off track and you actually your relevancy is not there, which is why we need to be concise, clear when we are making tools, and we must know what we are assessing. Consider using rubrics or scoring guides. Scoring guides सबके पास होती है, स्कूल वालों ने दी होती है या उनको हमें यार्डस्टिक दी होती है कि हमने किस तरह से चीजों को चेक करना असेस करें to provide structure feedback to students ताकि हम स्टूडेंट्स को भी जो है ना फीडबैक दे सकें. मैं अपने कॉलेज के दौरान मैंने इधर रावलपिंडी में पढ़ाया. So what I would do is or was rather कि मैं एक स्टूडेंट को ये जो इंटर के स्टूडेंट एफएससी के स्टूडेंट जो थे उनको अपने साथ बिठा के बात करता था कि बेटा आपको इस तरह से नहीं यहाँ पे लिखना चाहिए, ये गलती है, इसको इम्प्रूव करो और अगले आपके एग्जाम में या टेस्ट में आई डोंट वांट यू टू मेक द सेम मिस्टेक. और मैं सिर्फ पेपर पे कमेंट्स नहीं लिखता था, मैं बल्कि उनको बिठा के उनसे बात करता था कि नहीं भाई बेटा आपको इधर से इस तरह से इसको करना चाहिए था, आपको अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इससे बेहतर बनाना है, आपको अपनी वोकैबुलरी पहले से बेहतर बनानी है, राइटिंग स्टाइल पे काम करें, पेपर की प्रेजेंटेशन ठीक करें. So I used to talk to my students, exchanging ideas and getting feedback from them. फिर उनसे भी पूछना. इस तरह से क्या होता है, you actually create a conducive atmosphere between you and your student. और फिर वो student समझते हैं कि हमारे जो teacher हैं they are actually very क्या उनको कहते हैं gentle और considerate कि हमें वो हमारे से बात करते हैं और वो मतलब कि आपका जो है इसमें आपकी जो ऑनर है बेसिकली वो भी इंक्रीज होती है. दैट्स व्हाट आई थिंक सो.
So structure feedback student को provide करना चाहिए हमें. Flip classroom approach. How do you define this, and what do you think about this? Anam, can you read for me? Yes, sir. Flipped classroom approach, using technology to deliver instructional content outside of class, allowing in-class time for more interactive and application-oriented activities. Yeah. Can you explain this? Yes, sir. सर ये कि क्लासरूम में हमें एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग जो हमने पहले बात की थी कि उसको भी हमें चेंज करना चाहिए मेथडोलॉजी Yes. को. लाइक यही नहीं कि आप बुक के थ्रू ही आप समझाए जा रहे हो, उसको फ्लिप आउट करना चाहिए. लाइक आप बुक से हट के भी बात करो और मतलब उनको रियलिटी बेस पर समझाई जाए बात, क्लास में बात की जाए हर बच्चे से, और उसको मतलब प्रेजेंटेशन की तरफ जाया जाए. तो दैट वुड बी द बेस्ट अप्रोच इन दिस आई गेस कि आप उसको बच्चे को बुला. सबसे बेस्ट अप्रोच आपको क्या लगती है कि कौन सी हो सकती है? लाइक उसको प्रेजेंटेशन के थ्रू हम अगर काम कराएं इस पे, तो दैट वुड बी द फ्लिप क्लासरूम अप्रोच आई गेस. Anybody else, please? Yes, sir, may I? Yes, please. सर इसमें ये है कि हम कुछ एक्टिविटीज मतलब इस तरह करवा सकते हैं कि हम बिफोर लेसन यानी कि बच्चों को कोई भी इंस्ट्रक्शनल वीडियो वगैरह दिखा दें क्लास के से पहले, और फिर उसके बाद उनको उसी वीडियो से रिलेटेड हम उसको कोई भी एक्टिविटी दे दें, कोई भी वर्कशीट दे दें या कुछ भी दे दें उनको देखने के लिए कि आया उन्होंने जो हमने उनको उन्होंने जो भी वीडियो देखी है स्ट्रक्चरल वीडियो, तो आया उन्होंने उसको किस हद तक फॉलो किया है. ये हम दे सकते हैं बड़े स्टूडेंट को. मेरे एक क्लास में, मेरी क्लास की एज ग्रुप की क्लास नहीं, लेकिन क्लास ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में हम इसको दे सकते हैं. इसी तरह से हम उनको जो है ऑनलाइन क्विजेस वगैरह दे सकते हैं कि आप इन वीडियोस को देखें और उसके बाद जो है आप क्विजेस को जो है वो सॉल्व करें. तो फिर उससे हमें पता चलता है कि जो हमने उन्हें बताया है उसको उन्होंने किस हद तक फॉलो किया है. वीडियो के थ्रू जो भी उन्होंने देख लिया उसको किस हद तक करने में कामयाब हुए इंस्ट्रक्शन देखने के बाद. इस तरह की एक्टिविटीज हम कर सकते हैं. Go ahead. I'm listening. Please go ahead. हाँ, ओके सर. इस तरह की एक्टिविटी जो है ना, ये फ्लिप क्लासरूम अप्रोच के में जो है मैंने ये मतलब वीडियोज वगैरह के थ्रू है जो है हम क्लास में उनको चेक कर सकते हैं कि वो हमारी जो इंस्ट्रक्शन है उसको किस हद तक जो है तो उसको सुनने में और उसको जो समझने में वो कामयाब हुए हैं. और फिर आया हम उनके वक्त के थ्रू चेक कर सकते हैं उनको कि उन्होंने उसको कितना फॉलो किया है जो भी उनको इंस्ट्रक्शन वीडियो बताई गई है. इस तरह की एक्टिविटीज जो है उनके अंदर मतलब काफी हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए. Very good. Thank you so much. Yeah, this is great. And let's talk about environmental and sustainability education. This is very short slide, but very effective. And can you read it for me, please? Environmental and sustainability education, integrating content and activities that raise awareness about environmental issues and promote sustainable practices. Sorry, sir. गला खराब मेरा बहुत ज्यादा हो. Acha? Sorry. May I read? Yes, please. Go ahead. Environmental and sustainability education, integrating content and activities that raise
awareness about environmental issues and promote sustainable practices. आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दे प्लीज। Um, uh, सर ये जो इस तरह की एक्टिविटीज है, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ उसमें ये है कि हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो है वो अवेयरनेस देने में काफी हेल्पफुल होती है। जो एनवायरमेंटल सिंपली हम यही कह रहे हैं, एग्जैक्टली सिंपली हम यही कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को देखें ना, हमने कंसेप्ट थ्योरी को देखा, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी को देखा, कॉग्निटिविज्म को देखा, बिहेवियरिज्म को देखा, हमने सब कुछ देखा कि सब बहुत अच्छा है, सब बहुत भला है। बट व्हाट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज जो हैं हमारे इधर इर्द गिर्द के हैं। ये सिंपली से यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देना चाहूँ, इफ यू विल अलाउ मी प्लीज टू। गो अहेड। Your voice is not clear, it's making problem. ये सर जैसे फॉर एनवायरमेंटल इशू, जैसे अर्थ डे है या सेव द अर्थ है, इसके इशू पे हम बच्चों को मतलब कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि वी शुड recycle the things and we should reduce the pollution, or this type of things we can give them, because ये हमारे environment का बहुत बड़ा इशू है। तो इस तरह के जरिए हम इस तरह के टॉपिक्स बच्चों को काफी हद तक समझाने में कामयाब हो सकते हैं इस के थ्रू environmental sustainability education। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती है बच्चों के अंदर अवेयरनेस लाती हैं और बच्चों को इस तरह की चीजें समझाने में ये हेल्पफुल साबित होती है। तो हमें क्या मतलब स्कूल लेवल पे भी, अपने होम स्कूल लेवल पे भी बच्चों को कुछ बताना चाहिए कि भाई आप माहौलियत का भी ख्याल रखो, बस ये तो नहीं कि बस पढ़ते जाओ और आप मतलब कि इधर उधर आपको कुछ भी ना पता चले कि जिंदगी में एक्चुअली हो क्या रहा है और सिटी में क्या हो रहा है और किस तरह हमने गंदा किया हुआ अपने सिटी को, कोई हमें कोई फिक्र नहीं किसी चीज की। मतलब हम टेक्नोलॉजी को बहुत यूज करते हैं, Yes sir, इंस्ट्रक्शन obviously. मेथड। जी जी। तो इसका मतलब एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत रोल है हमारी जिंदगी में। Yes. तो वैसे आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान लेवल पे इस पे काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सर बहुत ज्यादा होना चाहिए, और मेरे सिटी में तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, जो मेरे सिटी का हाल है। सॉरी टू से आई एम सेइंग लाइक दैट, बट हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा नीड है इस चीज की, कि हमें जो है एनवायरमेंटल इश्यूज पे बात करनी चाहिए और बच्चों के अंदर इसी लेवल से जो है ना शुरू से ही उनको जो है अर्ली एजुकेशन से ही उनके अंदर अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। हाउ शुड वी कीप आवर एनवायरमेंट सेफ। Yeah, because they're busy. I mean, we are busy littering our city, roads, and parking places, and wherever you go, you find. I mean, the place is a litter and full of dirt or something, and messed up, and people are still messing all that. So I think we need to have this kind of education that can sustain our behavior as well. So sustainability education, in terms of when we talk about environmental issues, I think we need to be also vigilant on that, and we need to be more what we call it concerned about that. So we need to promote sustainable practices. ये बहुत जरूरी है। जी सर बात करें। हो रहा है पाकिस्तान में भी, स्कूल्स में काम हो रहा है, लाइक मेरे बच्चों के स्कूल में तो कर रहे हैं। एक जैसे रिसाइकलिंग की बात की इन्होंने, तो उनको एक मिला था प्रोजेक्ट लास्ट ईयर, उन्होंने करना था कि रिसाइकल करना था किसी भी प्रोडक्ट को। तो ये उनकी होम थी, मतलब असाइनमेंट थी। तो मैंने फिर उनके साथ मिलके बनाया था, बॉटल्स को हमने काट के तो उसको पेंसिल बॉक्स बनाया था। तो ये एक्टिविटी हुई थी इनके स्कूल में, और जो बहुत कुछ लर्न किया था बच्चों ने इससे। Okay. So that means something is actually taking place, eh? एग्जैक्टली। Sorry, वो कुछ कहवा पिए, कुछ गर्म चीजें इसमें डाल के वो जो क्या होता है, whatever. Yeah. Well, thank you so जी much, and आप सबके लिए गुड न्यूज़ भी है हमारे पास।
हमारी Yes, sir. एक्रेडिशन जो है वो यूके से भी हो गई है इस कोर्स की, पीजी सर्ट की। यस, तो मतलब यूएसए में हमारी थी ऑलरेडी उनके साथ, एंड नाउ वी आर आल्सो, यू नो, दैट्स अ गुड न्यूज़, बट ऑफिशियली वैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है, वो मुझे वो तो पूछ तो लेंगे, तो मैंने वैसे आपको बता दिया। ऑफिशियली विल आल्सो अनाउंस दिस, बट जस्ट फॉर यू, for your kind information, that we are now accredited with the UK institution है जो उनका evaluation का, तो उनके साथ हमारा हो गया है। So that's a really really good thing for us. हम इसको वैसे आपको भेज देंगे इसको, अब वो जो हमारे पास उनका लेटर आया है या जो भी है, वो I mean we will share with you. But that's a good news. That's I just wanted to share with you. थैंक यू वेरी मच सर। सर हाँ, ये हमारे हमें तो ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा सर, इसमें क्या मेंशन होगा कि एक रेगुलर सर्टिफिकेशन जिस तरह की होती है, या ऑनलाइन इस तरह का कुछ मेंशन होगा? नहीं, वैसे हमारा जो जो है, ऑनेस्टली स्पीकिंग एट द मोमेंट आई एम नॉट एबल टू आंसर, लेकिन आमतौर पे ऐसा नहीं होता कि ऑनलाइन उस पर लिखा हो, मगर यह है कि चूंकि ये 60 कैट आवर का कोर्स है और हमने इसको हाइब्रिड मॉडल की सूरत में इसको प्रेजेंट हम कर रहे हैं और किया भी है, ठीक है। तो ये इसकी जो मतलब वर्थ है बहुत ज्यादा है, यस बहुत सर। ज्यादा worth, yes. So it will be such a nice, like wonderful, wonderful certificate that you can actually utilize in your life. थैंक यू। अच्छा सर, ये आज की जो है सारी स्लाइड्स हैं सर, क्या ये मिल सकती हैं एज आपने प्रीवियसली भी शेयर कर दी थी, तो आसानी होगी थी सर। रेगुलर इंफॉर्मेशन नहीं होगी। हाँ, अभी अभी वो आए हैं सर, उन्होंने मुझे बता दिया है कि जब हम सर्टिफिकेट देंगे ऊपर मेंशन नहीं होगा कि ये हाइब्रिड है या ऑनलाइन है, वो एक सिंपल जिस तरह दूसरा सर्टिफिकेट वो ऐसा ही होगा कि 6 मंथ्स का 60 क्रेडिट आवर का आपको सर्टिफिकेट मिला है। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर। It's beautiful, beautiful, and thank you for being with us. Seriously speaking, और ये बहुत बड़ी अच्छी खबर मिली है, कल का हमें लेटर आ चुका है, तो I was just like super excited just to share with you, लेकिन official announcement तो वो कर ही देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। Yeah, that's great. Well, we can stop here, and let me find out about the next session, and we can go for break for probably 10 minutes. और ये मैंने आपको, आपने देखे मैंने आपको मॉड्यूल भी भेजे हैं, भेजे सर उसमें ग्रुप में। Yes, sir, we checked. वो मॉड्यूल अगर आप उसको गौर से देखें ना, तो जो पहला मॉड्यूल है वो मतलब कि 1.5 माह में हम खत्म करना चाह रहे हैं, तो मतलब अगले हफ्ते में तकरीबन हम उसको वाइंड अप कर रहे हैं। तो अगर आप देखो, we have been talking about education psychology, and then we will switch on to the second module हमारे साथ होंगे प्रोफेसर डॉक्टर रशीद साहब, एयर यूनिवर्सिटी से हैं, और मैम तबीता होंगी, मोस्ट प्रोबेबली जेम्स लिटन होंगे जो हमारे सीईओ भी हैं, एंड लाइक he's the boss of this institution as well, is a Dr. James Litton who finished his PhD from United Kingdom. तो मतलब नेक्स्ट मॉड्यूल में, और मुमकिन है कि उसमें मेरा भी कोई एक आधा लेक्चर आ जाए, बट एनीवे गो फॉर ब्रेक एंड we'll see you very soon. Thank you. ओके।
Should I leave? लेक्चर ले रहे हैं। हो गया सर लेक्चर? हो गया। कैसे हैं आप? नहीं सर। नहीं आप अच्छे? आप किधर अच्छे होंगे? आप मुझे नहीं आ रहे सर। अच्छा सर क्या होता है ये वन टीचर पता जरूरत है या पूरे हो गए? एक स्टूडेंट आया हुआ है, उससे मैंने इन्फॉर्मेशन ली है, अमेजोन पढ़ने आया है। वो कहता है इंग्लिश अच्छी है और वो कहता है शायद 12 ईयर एजुकेशन में भी है उसकी। क्या करना है उसको? उसको एनरोल करना है, करवाना है या नहीं करवाना, आप बताएं। वो करना चाहते हैं? हाँ वो आप कहेंगे तो करवा लेंगे, तब क्या? जब आपको जरूरत है तो। हमारे जरूरत तो इश्यू नहीं, उससे उसको शौक है तो चलिए मैं उससे पता करता हूँ, इन्फॉर्मेशन लेता उसको हूँ। शौक है पढ़ने। हाँ अभी तो पहले डेमो क्लास लिए, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ जैसे लैपटॉप में नॉर्मल में समझे, शायद इसमें भी इस तरह नॉर्मल बंदे जरूरत है। मैं उससे पता करता हमें हूँ। 2-3 बंदे को थी, हम्म। एक बंदे को हम ले सकते हैं। चले मैं उससे पता करता हूँ ना कि उसकी क्या इंटरेस्ट क्या है, और वो क्या कहता है, मुझे इंग्लिश सारी समझ आती है। वो फी देगा। फ्री? तो आपका लैपटॉप का हो गया? नहीं नहीं वो वैसे आया हुआ है, वो वैसे ये आया। वैसे चल गया कि नहीं वो उसके साथ? लैपटॉप वाला सर अभी आज आया उनको रिप्लाई। Sir, if you don't mind, extension is your. तो बैठना है आपने। I bet you with his. Good afternoon, कैसे हैं आप? आ गया प्रोजेक्ट आ गया, तो हुकूमत को थोड़ा सा स्टेबल होने का दे। तेरा दिल है सनम।
Um, Hi, good evening. You there? Hello? I'm not sure if I'm audible to you both. Would you please just confirm? Miss Anjum, Miss Shoaib? Hello, ma'am. Yes, you are audible. Sorry, I was offering my prayer, so that's why I wasn't answering. Oh, I'm really very sorry because That's fine. yeah, यहाँ पर आवाज आ रही थी अभी अजान की and I'm really very sorry. I did take break as long यहाँ पर आवाज आई है. I did not know you were offering. No problem. I'm fine. Yeah, thank you for understanding. Also, I just want to tell you that we are concluding the day for today because Ma'am Shumaila, who started metacognition with you, for some domestic reason, she is not unable to join us today. And yeah, उन्होंने आपके साथ उसको cover करना था. Otherwise, tomorrow with me, we are going to talk about experiential learning, right? So ये मेरा topic होगा आपके साथ कल और अगर सिस्टर शुमाइला आगे तो थोड़ा सा या half hour उनका session होगा. If not, तो फिर हम अगले किसी वक्त में adjust करेंगे. Otherwise, I will be taken overall कल के दिन में experiential learning पे मुझे बात करनी है. So I will request you कि आप ज़रूर इसके हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिएगा what actually it is, so that when we come here together it should be interactive and discussion based, right? जब हमने वो like prepare किया होता है, so you already know, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था. I was there continually. आज के session में भी आप like it's just a second class for you or third maybe, right? आपने in fact this is the third one, right? आपने previous week में middle में join किया था, class already जारी थी और आपने, लेकिन आज आपका participation बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है throughout और बहुत interactive रहा है. Yeah, sir was already telling कि आपने तो course कर ही लिया. So इस तरह से है. Yeah, so really glad that we do have very, we have proactive and professional people with us. Although नहीं भी जो पढ़ा रहे हैं, they are acting the same way. और फरहाना वो साथ में पढ़ा भी रही होती हैं because she still has the school during these this course hours. तो फिर भी उनकी participation बहुत active होती है. She is such an active listener. So this is the only thing that I just wanted to reassure कि आपको कल का discussion topic पता हो और उसी में मिलकर हम learning करेंगे. And otherwise, yeah, we call it a day to day, right? आज अभी बस. So the class is dismissed otherwise. If you have any question, anything, you may ask. No, thank you so much. Yeah, our sir ने already भी एक good news disclose किया that we are accredited with UKIQ as well. Congratulations. Thank you so much. Yeah, it's such a huge thing for us. We are really happy because we are just 3 years old. And yeah, so 2021 में हमने start लिया. And the good part is I really want to appreciate you as well and want to make you acknowledge that this is the first batch Pgcert का. Yeah. So Yes. also, as alumni, you shall always be reminded as, remembered as history makers, and you can remind Exactly. yourself that you are the history makers with Tilty. Yeah. Exactly. Yeah. So, okay, thank you. And may you have a wonderful evening.
Thank you. Thank you for Hannah. Yeah.